Hello everyone, this is Abinash, your friend and mentor for UPSC Civil Services examination. Friends, note making is very crucial if you want to clear this UPSC Civil Services examination. Most of you have asked me this question, how to make good notes, precise and systematic notes for UPSC Civil Services examination. In this video friends, I'll teach you the art of note making. Especially I will teach you a extremely helpful software or application that is called as Evernote, which will really help you a lot. This will simplify your UPSC preparation. Friends, first thing, why notes are so important. Along with that also we'll discuss about how to make notes on pen and paper. First thing friends, we'll discuss why notes are so important. First thing, it makes your एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक्सट्रीमली सिस्टमेटिक. हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों? तो एक दिन कभी हम लोग पॉलिटी पढ़ लेते हैं, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ देते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली अनऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज ऑफ दिस वी फॉरगेट व्हाट एवर वी रीड. फ्रेंड्स, वी नीड टू बी एक्सट्रीमली सिस्टमेटिक. हमारे जितने नोट्स हैं पॉलिटी के एक जगह होना चाहिए. देन आपके जो इतने इकोनॉमी के नोट्स हैं, जो जो बुक पढ़ा है, जो जो करंट अफेयर्स व्हाट एवर यू हैव रेड, इट शुड बी इन वन प्लेस. दैट्स वाई नोट मेकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपका नोट्स काफ़ी सिस्टमेटिक होना चाहिए. फ्रेंड्स, एवर नोट, आई विल टीच यू अबाउट एवर नोट एंड आई विल टीच यू हाउ वी कैन ऑल्सो मेक नोट्स ऑन पेन एंड पेपर. सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स ए लॉट इन रिविजन. आपको इनिशियली लगता होगा क्या है यूपीएससी का सिलेबस, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे बुक्स है, करंट अफेयर्स है. यू नीड ए वेरी क्रिस्प नोट फॉर रिविजन. आप जो 1 ईयर या 2 ईयर जब प्रिपरेशन करते हो तभी पता चलता है फ्रेंड्स, एंड अदरवाइज यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग. आपको इट हेल्प्स यू ए लॉट इन आंसर राइटिंग, बिकॉज आपका नोट मेकिंग जैसा स्किल्स होता है फ्रेंड, इट हेल्प्स यू ए लॉट इन आंसर राइटिंग. आपका आंसर भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है. फ्रेंड्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो फ्रेंड्स, कैसे मेक, हाउ टू मेक नोट्स? एवर नोट और वन नोट यू कैन यूज इट. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और इधर यू कैन डू इट ऑन पेन एंड पेपर. मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा. फ्रेंड्स, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट प्लीज इंस्टॉल एंड प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन एवर नोट. क्योंकि क्या होता है कि पेन एंड पेपर का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है. इनिशियली इट्स वेरी इजी, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग मैनी एंड मोर बुक्स एंड मोर मटेरियल्स, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइज करना. लाइक पॉलिटी के जितने करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के एक साथ आपको ऑर्गेनाइज करना होता है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आपको थोड़ा एडिट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. दैट्स वाई प्लीज यूज दिस सॉफ्टवेयर एवर नोट. मोस्ट ऑफ द यूपीएससी टॉपर्स दे यूज दिस वन. You can download it from the Google Play Store and you can install in your mobile phone and please make extremely precise. मैं अपना खुद का नोट्स भी दिखाऊंगा एवर नोट में जो मैंने बनाया हुआ था. मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी दिस हाउ टू शेयर माई नोट्स विथ यू. बट फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपके खुद के वर्ड्स हो गए. एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक योर ओन नोट्स. आप कोई टॉपर्स के आंसर, कोई नोट्स वगैरह देखते हो, इट डोंट हेल्प यू. बिकॉज क्या होता है कि इट डोंट हेल्प यू. उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स. सो पेन एंड पेपर में कभी कभी पेन एंड पेपर का कुछ कॉन्स भी है, उसके कुछ उसके बारे में बताऊंगा. इट्स वेरी इजी. एंड फ्लोचार्ट, अगर फ्लोचार्ट वगैरह करना है, कीवर्ड्स वगैरह आपको लिखना है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल. आप क्या करिए, पेन एंड पेपर के लिए प्लीज बाय अराउंड 10-12 फोल्डर्स. फॉर पॉलिटी बाय 1 फोल्डर, फॉर इकोनॉमिक्स बाय 1 फोल्डर, फॉर ज्योग्राफी प्लीज बाय 1 फोल्डर. फ्रेंड्स, आपका जो नोट्स है वो एक ही होगा. इट इज सेम फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. मैं करंट अफेयर्स, आई डोंट सेग्रीगेट करंट अफेयर्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्टैटिक. आपका जो पॉलिटी का करंट अफेयर्स होता है, लक्ष्मीकांत में भी वो मिल जाता है. फ्रेंड्स, आप लोग लक्ष्मीकांत अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो करंट अफेयर्स में वही चीज़ें होती है. सो प्लीज मेक ओनली 1 नोट, और उसमें आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी ऐड करना है. Friends, let's go into this part. We'll talk about my own Evernote account. You can find it. So मेरा खुद का Evernote account ऐसा था कि यहाँ पे Evernote में आप अगर जाएंगे तो एक आता है कि नोट, यहाँ पे फर्स्ट पे आता है ऑल नोट्स, सेकंड पे आता है नोटबुक्स,
तो नोटबुक पे आप क्लियर करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं एक नोटबुक करके प्लस का ये से एक मार्क दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा एक छोटे छोटे नोटबुक्स है, नोटबुक्स के बीच में एक छोटे छोटे चैप्टर, देयर आर मेनी चैप्टर्स। So let's go into this one, friends. These are four main notebooks I have prepared: paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4. This should be the format. Let's click into this paper 1. Actually, please make your notes according to the UPSC syllabus. UPSC syllabus का जो especially main syllabus जैसा है paper 1 के लिए, please make notes according to that one. Here first one, geography is in GS1, so I have made geography static and dynamic in paper 1. Then again history and culture also. Then you can see Indian society. This is for paper 1. If you click on paper 2, you will find international relations. Here also in paper 2 you will find polity and governance. Similarly friends, in paper 3 you will find agriculture, disaster management, economics, economy, environment, internal security, everything you will find in paper 3. So friends, prelims and mains examination, only one note should be there. आपका जो prelims के facts and details होते हैं, datas वगैरह, you can write here also, and for mains also you can write, only make one note. That is extremely important. Let us go more detail into this part, especially let's go into geography. Geography friends, what should be the topics? What should be the topics inside this note one? Here the things, whatever is given in UPSC syllabus, especially in main syllabus, it should be the title or heading of this note. You can find salient features of world geography, factors responsible for various primary, secondary, tertiary industries around the world. Then you will find appendix syllabus. I have made this part is extremely important, friend. This syllabus is from mains examination. You can go through this one, and I have made each of the topic one note. So geography comprehensive is there, natural resources of India, climate of India, Indian physical geography. So whatever I read, NCERT book or any other book or Khullar book, any other book, I used to write the summary here. Or if I read something specially from current affairs, कुछ मुझे topics मिल जाते थे, जैसे कि cyclone is there, Amphan is there. So you can write in the climate part, cyclone and Amphan. What is the eye of a cyclone? This is how it's extremely easy to edit also. You can find here. I am zooming here. Okay, there is some little issue, some error with my notes, especially with this software. So friends, you can download it from download Evernote from Google Play Store, and you can install. And this is how you should make notes. Friends, आप जो भी पढ़ते हो, whatever you read, newspaper or any other book or anything, please whatever you find to be helpful for UPSC examination, please make a note. It is extremely important. और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आप जब पढ़ने लग जाते हो, then आप थोड़ा काफ़ी precise होना लग जाते हो. Whatever previously you might be taking 20 words, now you will take 10 words or something. So धीरे धीरे आप short and precise होने लग जाते हो. So this is how friends you have to use Evernote or OneNote. This is for now, and I will cover the other parts of note making in other videos. Thank you everyone.